can see all the chain down there. It's all dirty and mucky. 1.5 months, no servicing, and these rusts are... Hello amazing people, thanks for tuning into my channel. This is your host Archishman, and first of all thanks a lot for the amazing response on my previous video of Loop Lube. And if you still want to order the Loop Lube chain cleaner as well as the chain lube, I have my personal link down below. It will be in the pinned comments as well as in the description down below. आज का जो वीडियो है वो भी थोड़ा चेन क्लीनर एंड चेन लूप पे ही होने वाला है. ऑफ कोर्स लूप लूप आज का थोड़ा पार्ट डिफिकल्ट होगा बिकॉज लास्ट टाइम आई हैड यूज्ड इट ऑन द रोड बाइक विच इज स्वागतो's रोड बाइक. उसका इंस्टा आईडी यहाँ पे. एंड थैंक यू सो मच स्वागतो फॉर लेंडिंग मी योर बाइक एंड ट्राइंग इट आउट फॉर अराउंड 1.5 months, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो लॉकडाउन में फंसा हुआ था अपने होम टाउन में एंड हिज बाइक वॉज इन कोलकाता. सो मेरे तो मजे ही हो रहे थे. एनीवेज आई एम बैक टू माई ओन बाइक राइट नाउ एंड आई हैव नॉट रिडन इट फॉर अबाउट 1.5 months जब तक स्वागतों का बाइक था. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज यूजिंग इट. ऑल्दो ही इज अ वेरी गुड राइडर बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट हैव द चेन क्लीनर एंड द चेन लूप. सो चेन जो है वो डेली यूज होता था. सो बेसिकली दिस इज माई बाइक. This is the Montra Helicon X. I got it around a year back in June 2019. So this is the chain. Already जो दिख रहा है व्हील का कंडीशन बहुत खराब है बिकॉज दिस इज माई प्राइमरी कम्यूट बाइक एज वेल. तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो कम्यूट में पूरा खराब हो गया था. एंड लुक एट द चेन हियर. ये तो फ्री व्हील जो है, एक्चुअली फ्री व्हील इट्स नॉट अ कैसेट. सो ये फ्री व्हील जो है इट्स सपोज टू बी गोल्डन कलर्ड ओवर हियर, जो ब्रोंज का कलर होता है, बट इट हैज गॉन ऑल ब्लैक. यू कैन सी ऑल द चेन डाउन देयर. इट्स ऑल डर्टी एंड मकी. 1.5 months, no servicing, and these rusts are minor rust from yesterday's ride. Actually, yesterday I went to office on this. You know what happens? Your undercarriage gets all wet and all, and it gets dirty. So आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं किया साइकिल साफ करने का, which is a very big flaw. So what better condition to test out this baby, this loop wipe chain cleaner, which I have tested on my road bike as well. Condition तो आपने देख ही लिया, and let's check out if it can do the magic as it has done it on my road bike, क्योंकि उसका chain a bit cleaner था. So first things first, if you are running a disc brake like this, first of all cover your disc brake with something like this, so that the degreaser does not touch your disc brakes, the disc rotors, and contaminate it. So this time also I'll be repeating the exact same steps what we have done it the last time on my road bike. If you have not seen the video, just take it out in the I button here or here somewhere to know what are the steps to be followed while cleaning with the loop wipe chain lube, because इसका process a little bit different है. So let's go on with the first step. I'll be doing the same exact step, so let's fast forward the things a bit. Just finished doing the step 1, that is spraying with a medium pressure, and I have also brushed it afterwards before letting it set down for 10 minutes, so that जो chain cleaner है वो पूरा chain के अंदर अंदर तक चले जाए and it starts doing its magic for 10 minutes, and after 10 minutes we have to do the step 2 like last time. 11 minutes later. Okay, so 10 minutes is complete and we can now move on to our step 2, and let me show you the condition of the chain right now. जस्ट आफ्टर स्टेप 1 के बाद क्या हालत है. सो जस्ट आफ्टर ब्रशिंग फ्रॉम स्टेप 1 वी कैन सी ब्रशिंग के वजह से यहाँ पे पूरा काला काला गिरा हुआ है, एंड दिस वाज सपोज टू बी ऑल सिल्वर, लीविंग दिस ब्लैक पार्ट अलोन. सो दिस इज ऑल डर्ट, यू कैन सी यू. And in step 2 we just again have to repeat the same thing as step 1, keeping the bottle at 45-degree angle and spraying it over the chain again, but this time with a medium pressure, a bit more than the first time but not going all out. Okay, so just medium pressure and roll it for 5 to 6 times. Anyways, I feel I am showing all this process again unnecessarily. If you have missed out my last video on how to clean your drivetrain with the loop lube chain cleaner and lube it again, so just click on the I button or go to the description box below and you can find the video, and I will also enlist it by the end of this video. तो end of the video में जो वो suggestion box में video आता है, you can go and click on that. So you will get to know the steps to be followed while cleaning with the loop lube chain cleaner, because इसका process थोड़ा different है. It does not needs any water. It just goes cleaning in 3 steps
and your chain is fresh and clean as new, unless and until it is beyond repair, of course. So just finished up with the third step, that is spraying at the high pressure. After spraying, अभी कुछ ऐसा हालत है पूरा स्प्रे करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 7 स्पीड का चेन का कलर भी उतना वाइट नहीं आता है, सिल्वरी. सो द स्टॉक कलर इज ऑल्सो नॉट सिल्वर, एंड कैसेट का कलर तो ऑब्वियसली सिल्वर या वैसा कुछ नहीं रहता है. सो यू वोंट बी सीइंग द सेम कलर एज फ्रॉम द रोड बाइक लास्ट टाइम. सो आई जस्ट वाइप ऑफ द डिग्रीजर, एंड मेन जो मैजिक होता है ना वाइपिंग में होता है, द मोर यू वाइप एंड द मोर द डिग्रीजर कम्स ऑफ, शाइनियर योर चेन एंड द होल ड्राइव ट्रेन गेट्स. So this is the condition of the chain after cleaning it up. It worked pretty nice. All the gunk and the sand particles and dirt from inside the links have gone. अभी हाथ थोड़ा गंदा है इसलिए गंदा हाथ लगा दिया, but I will wipe it off again. You can see the color of the freewheel has also changed a lot, and this Shimano logo has come out. As you have seen, तो पूरा क्लाउडी हो चुका है, and it will start rain in about 5 to 10 minutes. So I took my bike inside and could not loop the chain right now because degreaser को अभी थोड़ा पोंछना बाकी है, and I already wiped it off a lot. So after 1 hour I will loop the chain again. उसको फिर से दिखाने का क्या मतलब है, you have seen it in the last video. Anyways, I'll meet you after this rain stops, probably tomorrow morning, because right now it's 5 PM and अंधेरा हो जाएगा obviously. Okay, so that was how the loop wide chain cleaner worked on the chain of my Montra bike. The chain was super dirty, and sadly the chain has already worn out. So I had to change the chain anyhow. But I could not show you properly the totally clean chain because before shooting this ending part of the video, I met with a small kind of accident. Luckily I was safe, but my bike is currently out of service. Actually, the public buses here in Kolkata are टोटली इनडिसिप्लिन्ड. गाड़ियों को कोई भाव नहीं देता है तो बाइक मोटरसाइकिल साइकिल वालों को क्या ही भाव देगा. एंड कोलकाता इज वन ऑफ द रेयरेस्ट सिटी इन द होल वर्ल्ड, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रोड्स अंडर द कमिश्नरेट ऑफ कोलकाता पुलिस, साइकिलिंग इज बैंड और इलीगल ऑन मोस्ट ऑफ द मेजर रोड्स. सो एनीवेज, कांट डू एनीथिंग. पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था इट्स अ क्वाइट बिजी प्लेस, एंड वहां पे अच्छा खासा ट्रैफिक पुलिस का भीड़ रहता है. बट nobody did really care when I went and asked the policeman कि you have seen क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा है, what to do next. He said this is not the place to ride cycle. এটা এখানে সাইকেল চালানোর রাস্তা নয়, সাইকেল বাড়িতে গিয়ে চালাও. It literally translates to this is not the place where you ride your bicycle. Go to a garden or at your home and ride the bicycle. So basically in their point of view is cycle cannot be used as a mode of transport. Only you can ride is for leisure or in garden or something like that. Anyways, let me show you my cycle currently. This is the condition of my bike right now. ये मेरे बेडरूम में ऐसा पड़ा हुआ है मेरे टेबल के सामने. The rear derailleur is gone. It is totally, the cage is totally gone like this. You might have seen like this one. The cage is totally bent and the derailleur is already gone. जॉकी व्हील वहां पड़ा हुआ है. एंड दिस इज द हैंगर. लकीली आई हैड द हैंगर, सो फ्रेम को कुछ नुकसान नहीं हुआ. हैंगर्स आर मेड दैट वे ताकि these things bend or break. Also, the rear wheel is damaged. The photo will be on the screen where you can see the rim is totally gone. I will replace the rim with I guess 700C or something like that. वो देखा जाएगा after the repairing video. I will obviously make a repairing or rebuilding video of this bike. Okay, so देखते हैं. Let me get the parts as soon as possible because the bike market in India is totally out of stock and the demand is super high. So let's see, hope for the best. And about the chain cleaner and the chain loop, it works superbly well. The link will be in the description down below and also in the pinned comments, जो पहला comment होगा from the channel bucket list. So you can click on the link over there and buy it from there. You will get a free delivery
as well as an added gift from the brand. So with that, मैं यही बोलना चाहूंगा, every day is not a good day. So with that, I will take a bow from here. Stay positive, stay happy, come whatever it may. साइकिल आपका टूट भी जाए तो बन जाएगा, but by God's grace, I am safe. With that, until next time, हंसते रहो, हंसाते रहो, जा भी रहो, मुस्कुराते रहो. Goodbye, take care.